Okay, morning everybody. How do you read me? Sir, loud and clear. Okay, great. So we are now coming on to calculating P during the critical period. That means when the water line is between 2 and 3. So we are talking about water line number 2.5. This will be different, sir. Different question. This will be a different, And as I said, that question. Okay. this is a different question. This is this is a different scenario now. So in this, basically, we are now talking about these questions are all going to be something else has to be given to us. So fall in water line will be given in the question. Fall in water line will be given in the question. These questions. Okay. Take a question. This is a new question now. A vessel of length 145 meters HF HF 3 meters forward of midship, MCTC 150, TPC 18, AM 7.5, Sir, please repeat. AM 7.5, kg 6.9, W 11,200, forward draft 3.72, half draft 5.70. Is floating in a dry dock. Where Sir, floating in dry dock. where the dock water height is 6.50 meters above the top of the blocks. Calculate the vessel's RGM and her drafts
forward and aft. When waterline is lowered by सर रिपीट करना एक बार when waterline is lowered by 1.5 meters. Is the question okay with everybody? यस सर Yes, sir. So these are the typical type of questions which come in the exam. इस टाइप के आते हैं जो अभी तक हमने करे थे वो खाली बेसिक्स थे जस्ट टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स एंड उसकी एप्लीकेशंस आएंगी आगे एज वी मूव फॉरवर्ड. तो वाटर लाइन जब लोअरिंग हो रही है 1.5 मीटर की, मेरी ओरिजिनल डॉक वाटर हाइट 6.5 थी. डेढ़ मीटर पानी नीचे गिरा तो फाइनल डॉक वाटर हाइट कितनी होगी? 5 मीटर. तो 6.5 माइनस 1.5 5. तो 5 मीटर मेरे फाइनल डॉक वाटर हाइट होगी. मेरा आफ्टर ड्राफ्ट 5.7 है. तो मतलब सब अब ब्लॉक पे बैठने के बाद भी एक तरीके से 0.7 और कम हो गई. बिल्कुल ठीक. इट इज आफ्टर नंबर 3. तो नहीं, एक मिनट होल्ड इट. 5.7 पे मेरा हाफ टच डाउन कर गया. क्रिटिकल इंस्टेंट चालू हो गया सर. क्रिटिकल पीरियड चालू हो गया करेक्ट सर 5 मीटर्स पे. तो 5.7 पे मेरा क्रिटिकल पीरियड चालू हो गया. हाफ टच कर गया. यस सर. तो मेरा हाफ टच कर गया. क्वेश्चन ये है क्या मेरा फॉरवर्ड टच करेगा? वो मुझे नहीं पता. नहीं पता सर. 70 cm अभी पानी रह गया है. अभी 70 cm में पानी ने गिरना है जो कि गिरेगा. यस सर. अब उस दौरान में क्या मेरा बाउ टच कर जाएगा कि नहीं करेगा ये मुझे नहीं पता. यस सर. ओके. तो all these questions come under the gamut of this fall in water line. And fall in water line का जो P का फॉर्मूला है वो है मीन राइज. ये मेरा P का फॉर्मूला है प्लस change in trim at the point of contact is equal to fall in water line after contact or change in draft at point of contact.
mean rise plus change in trim at the point of contact is equal to fall in waterline after contact or change in draft at the point of contact. मीन राइज का मतलब है P upon TPC. Plus, Sir, like this is given, like we have to by heart the formula, or it is Yeah. something application? yeah. This is, you just have to remember this. Okay, So sir. mean rise plus change in trim at the point of contact is equal to fall in waterline after contact. You will be using the final formula. I'm just leading you to the final formula. So P upon TPC is mean rise. Change in trim at point of contact. Point of contact is aft, so TA is equal to the fall in waterline after contact. P upon TPC. Change in trim TA, because aft में मेरा contact हो रहा है. So TA I know is equal to TC into LCF upon LBP is equal to fall in waterline. TC I know is trimming moment upon MCTC. Trimming moment is, this is trimming moment upon MCTC into LCF upon LBP is equal to fall. Trimming moment I know is P into LCF upon MCTC into LCF upon LBP. ये डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है, बट देन आई एम जस्ट डूइंग इट ताकि जब मैं बाद में इसकी एप्लीकेशन और भी यूज करूंगा तो ये समझ जाएगा, बिकॉज आई बी यूजिंग दिस फॉर ग्राउंडिंग ऑल्सो. सेम चीज यूज होगी ग्राउंडिंग में, इसलिए मैं अभी करवा रहा हूं. ये मेरा बेसिक फॉर्मूला है. मुझे इस फॉर्मूले से इंटरेस्ट है. दिस इज माय फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट. P upon TPC plus P into LCF square upon MCTC into LBP is equal to fall in waterline after contact. ओके, अब इसके यूनिट्स चेक करते हैं. P is tons, TPC tons per centimeter plus P tons, LCF square meter square, MCTC ton meter per centimeter, LBP meter. So let's start cutting. Tons, tons, centimeter goes on top. Ton, ton, meter square,
मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर गोज ऑन टॉप, राइट हैंड साइड का यूनिट्स क्या होगा? राइट साइड का यूनिट्स आपका सेंटीमीटर होना चाहिए। एग्रीड? Yes, sir. ओके, तो ये मेरा बेसिक फॉर्मूला है फॉर वाटर लाइन नंबर 2.5। जब भी क्वेश्चन में अगर मैं वाटर लाइन नंबर 2.5 में आता हूं तो मेरा फॉर्मूला नंबर 1 जो पी का था वो ये होगा। This becomes my formula for calculating P at waterline number 2.5. That means during the critical period. Formula number 2 will remain the same. Formula number 3 will remain the same. ओके सर। Clear है? So formula number 1 बदल गया, 2 and 3 सेम रहने वाला है। सर ये टीए लिखा है आपने, चेंज इन ट्रिम एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो ये चेंज इन ट्रिम है सर कि एट पॉइंट एट ऑफ व्हाट वाज द ट्रिम एट दैट टाइम? नहीं, दिस इज द चेंज इन ट्रिम एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब टीए। सी ट्रिम जो थी उसका एक कंपोनेंट है टीए, उसका एक कंपोनेंट है टीएफ, तो वो बात कर रहे हैं, टीए की बात हो रही है, चेंज इन ट्रिम। बेसिकली मोटा मोटा अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो ये जहाज है, ड्यूरिंग द क्रिटिकल पीरियड मेरी ट्रिम जहाज की होगी, जीरो नहीं होगी। यस। बिकॉज मेरा बाव जो है अभी भी पानी में है, हवा में है। यस। तो आफ्ट तो मेरा टच कर गया है, लेकिन मेरा बाव अभी डाउन नहीं आया है, तो आई एम स्टिल हैविंग सम ट्रिम। यस। तो इस दौरान में मेरा एक मीन राइज हो रहा है और एक मेरा टीए हो रहा है, और इन दोनों का प्लस ऐड करता हूं तो वो मेरे को देता है विच इज ड्यू टू द फॉल विच इज हैपनिंग आफ्टर आफ्टर has touched the fall in water line after the contact। ओके सर। ये कहने का मतलब है, ठीक है। सो कैन आई रेज दिस पार्ट? यस। So now let us start our question having with this background। अब क्वेश्चन शुरू करना है हमें। तो सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि I need to, this is a question of waterline 2.5, this is an ambiguity for me। I need to check for waterline 3। I need to do a check। So calculate P3। अगर मेरा जहाज वाटरलाइन 3 पे आता है, दैट मीन्स इवन कील पे आता है, तो उसके लिए P क्या होगा? तो राइट डाउन द फॉर्मूला। एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. ओके, कैलकुलेट P3। 404.6
08. Let me just check. How much is the initial trim? 1.98. 1.98. So 198 into MCTC 150. 50 upon LCF. LCF is 73.5. LCF is 72.5 and 75.5. 75.4. Yes, sir. 75.5. So how much is your P3? 393.37. 393.37. Is this okay with everyone? Okay. Now I come to this long formula. जब मेरा ये टक गया कि सबका टक गया है अटक गया है। सर हाँ जी. सर वीडियो पॉज हो गई थी सर वो कैलकुलेट करने के बाद। Yeah. So this is the formula for the long formula. This balance to fall, the right hand side, is how much? That is at 5.70 the touchdown happened and the final dock water height is 5 meters. That means basically the total fall minus the UKC ये समझ में आया कि नहीं? सर वो क्या लिखा है RHS? Right hand side. नो सर नो। RHS is right hand side. ओके सर। Balance to fall is equal to total fall minus the UKC. Total fall given in the question is 1.5 minus the UKC is 0.8. सर ये थोड़ा रिपीट कर देंगे सर नहीं समझ में आ रहा सर नहीं समझ में आ रहा. Okay. Okay. Let me draw a diagram. सर किसी का माइक ऑन है सर Can you just mute your mics, please? So
जाए। ये इनिशियल कंडीशन में वाटर लाइन नंबर 1 में है सिचुएशन, ये वाटर लाइन है। इस वक्त फॉरवर्ड का ड्राफ्ट 3.72 है, आफ्ट का ड्राफ्ट 5.70 है। इस वक्त डॉक वाटर हाइट 6.5 है। तो हाउ मच इज द यूकेसी? 0.8. 0.8 0.8। ऑलराइट, मेरे पानी ने गिरना है 1.5 मीटर। तो जब 1.5 मीटर पानी गिरेगा तो जो पहला 0.8 पानी गिरेगा उसमें तो कोई पी होगा ही नहीं। एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. Agreed. There'll be no p. Right, The sir. p will Right, sir. only start when the UKC becomes 0. Water line Yes, sir. number 2. Water line number 2. So how much is the balance to fall after contact? Yes. 1.5 में से 0.7 0.8 चला गया बिना किसी पी के, बचा कितना? Yes, sir. 0.7, sir. उसका मैंने एक फॉर्मूला निकाल दिया है। Balance to fall, that is your right hand side, is equal to the total fall given in the question, 1.5 मीटर minus the UKC. ये मैंने एक फॉर्मूला बना दिया जस्ट इन केस आपको ये समझ ना आया हो तो इसलिए। Sir, we can state that as at dot water is 6.50 minus 1.5 is 5 meter, then minus by the draft of we get 0.7. Absolutely, that is also, वो भी एक तरीका है। That is also another way of reaching the same point. ये समझ में आ गया कि नहीं? Yes, sir. Okay, all right. So can you now put all the values in this and calculate the P?
998.352. नहीं, something is wrong. The 267.1. नहीं, something is wrong. 220 के करीब आना चाहिए. Sir, 220.433. Correct. आपका सेम आया कि नहीं? कितना सर? 220. सर 220.378. 395. हाँ जी. 395 सर. 220395. Okay, सर it's the same. 220.378. Done. All Sir, are okay. 3 decimal basis तो क्लियर है मतलब. Correct. So, this is fine. कहने का मोटा मोटा मतलब ये है कि this component is something P. This component is also something P. So something P plus something P is equal to 70. So P is equal to what? You know, that's how you'll do it. So you're getting those 220.397.433, all is equal, all is fine with me. No issues. अच्छा, यहाँ पे P3 हमारा कितना आया था? 393 .377. 77. 377. Okay. Now we find that 220 is less than 393. That is, P is less than P3. Hence, what do you infer? What do you infer? कि सर अभी तक टच नहीं हुआ है, मतलब टच नहीं हुआ सर, P3 तक पहुंचने में अभी कम वेट है, मतलब वेट हाँ. पूरा Yes, डिस्चार्ज नहीं it is हुआ. from 2 to 3. Correct. Hence, critical period is not yet over. Finish, completed. ये समझ में आया कि नहीं, ये वाली पार्ट? सर एक बार वापस बता दोगे सर प्लीज? हाँ जी. 220 तक ओके है? यस सर. ऑलराइट. तो 220 अभी है और 393 होना चाहिए अगर जहाज क्रिटिकल इंस्टेंट पे आ जाए, यानी कि क्रिटिकल पीरियड खत्म हो जाए. लेकिन अभी तो 220 ही है. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जहाज में अभी कुछ ट्रिम है बाकी. इसका मतलब है क्रिटिकल पीरियड अभी खत्म नहीं हुआ. करेक्ट और नो? अगर ये P इस लॉन्ग फॉर्मूले से मेरा 420 आता तो इसका मतलब क्या है? मतलब क्रिटिकल पीरियड ऑलरेडी ओवर. ऑलरेडी खत्म हो गया. तो कौन सी वाटर लाइन पे चला गया मैं? आफ्टर 3. आफ्टर 3. आफ्टर 3, बिल्कुल सही. मतलब 3 खत्म हो चुकी है.
और आफ्टर 3 पे मैं ये फॉर्मूला यूज ही नहीं कर सकता। एग्रीड? यस सर। ये वाला फॉर्मूला मेरा सिर्फ 2.5 के लिए है, तो मैं ये यूज ही नहीं कर सकता, यस सर। तो मेरा ये फॉर्मूला नहीं चलने वाला था। तो इसलिए मेरा जरूरी है ये चेक करना, क्योंकि डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में फॉल कितनी दी गई है। सपोजिंग मैंने फॉल आपको 2 मीटर दे दी होती, तो आप तो चल पड़े। तो अभी इसका मतलब है क्रिटिकल पीरियड खत्म नहीं हुआ। देयरफॉर करेक्ट पी इज इक्वल टू 220.3797 टन। ये समझ में आ गया? इज इट ओके? यस सर। ओके। ओके यस सर। ओके। अब फॉर्मूला नंबर 2 पे चले जाओ और मुझे वी लॉस की वैल्यू बताओ। uh, 0.148. Yes, sir. 0.148. आपका सेम आ रहा है। Go to formula number 3, calculate RGM. uh, 0.452 RGM. ठीक है। ये RGM है हमारी। ओके। अब ड्राफ्ट्स पे आना है। नाउ वी कम टू द ड्राफ्ट्स। तो P हमें पता है, कैलकुलेट द मीन राइज। $12.244, sir. To meter.
Calculate the TC. One 110.933. 3 centimeters. Calculate TA. अब मैं बेसिकली फॉर्मूले में घुस रहा हूँ. That's what I'm doing. And I'm simultaneously revising your second math का formulas. वो साथ साथ चल रहे हैं. $57.761. Now calculate TF. Change interim forward. Plus TC. Plus TA. $53.171. Okay, मेरे पास सारी values आ चुकी हैं. I just have to make a draft table now. So I make a draft table. भाई माइक बंद कर लो यार. सर ये क्या लिखा है? ड्राफ्ट Table. This is the draft table I'm making. Forward and aft draft. तो जो हम second mates में करते थे, initial drafts. 3.72, 5.70. This is my initial drafts. I will have a mean rise. So forward draft minus, aft draft minus 0.1224. 0.1224. TFTA. Forward, मेरा बाउ नीचे जा रहा है, so TF will का sign will be plus. Aft, मेरा aft turn उठ रहा है, aft will be minus. Convert to meter. 0.532. 0.5776. This will give me draft forward. This will give me draft aft. मेरा final draft aft 5.50 बनना चाहिए. क्यों? 5 मीटर बनना चाहिए, सॉरी. क्यों? इनिशियल डॉक वाटर हाइट मेरी 6.5 थी. 1.5 मीटर पानी गिरा. फाइनल डॉक वाटर हाइट 5 मीटर. मेरा फाइनल आफ ड्राफ्ट कितना होगा? उतना ही होना चाहिए, 5 मीटर. तो ये मेरा चेक बनेगा. इसको मैं करता हूं तो ये आना चाहिए. अब फॉरवर्ड ड्राफ्ट निकालो. 4.2
1752. 4.175 175. सबका सेम आ रहा है और इसका पीछे का इसका सारा करने के बाद में सब्ट्रैक्ट करने के बाद में 5 मीटर आना चाहिए। सर आ रहा है। So that means I'm on the right track. मैंने जब शुरू किया था क्वेश्चन मुझे हाफ ड्राफ्ट फाइनल पुल ऑलरेडी पता था 6.5 माइनस 1.5 5 मीटर, इसका मतलब मेरा हाफ ड्राफ्ट भी 5 मीटर होना चाहिए। सिग्नल नहीं आ रहा क्या? चले गए क्या सर? हाँ जी, you can't see anything? No sir, we can't see you. Correct. Others, can you see? Yes sir, we can see. Yes. Okay. Yeah, you're visible. एक मिनट जरा फिर लॉग आउट करके लॉग इन कर लो in case you can't see. सर ये कैलकुलेशन के बाद वापस बताइएगा सर, ये ड्राफ्ट टेबल में। So this is your initial drafts. You had a mean rise, so minus minus दोनों जगह पे because you bodily rise किया and your bow has come down. So TF का साइन प्लस and अगर TF का साइन प्लस तो TA का साइन माइनस. That will give you your final draft. सर ये वापस बता दीजिए एक्सप्लेन करके, ये कैसे प्लस माइनस है? ये मेरा जब पावर ड्राफ्ट जब ये मेरा बाव नीचे जाएगा, जब P पीछे से एक्ट कर रहा है तो मेरा आगे का ड्राफ्ट बढ़ेगा क्योंकि बाव नीचे जा रहा है तो प्लस होगा। Yes, sir. TF का साइन प्लस होगा, अगर TF का साइन प्लस होगा तो TA का साइन माइनस होगा। ठीक है सर। तो मीन राइज में दोनों माइनस एंड जब ये प्लस तो ये माइनस। जैसे ये कैलकुलेशन आप सिर्फ 3 डेसिमल प्लेसेस तक करते हो ना सर? दैट्स राइट। बिकॉज़ व्हाट आई सर ये एम कैलकुलेशन मैच नहीं करता ना फॉर्मूला। क्यों आपकी क्या नहीं मैच कर रही 4.17 बताओ? सर जो फॉरवर्ड सर वाला फॉरवर्ड है ड्राफ्ट 4.129 आ रहा है। 129 ये फिर गलत 129 है। आएगा, एक मिनट, ये फिर गलत है। वहाँ पे कंफ्यूजन हो रही तो है। कैंसिल 130 सर, टू बी एक्यूरेट 130। ओके 4.129 और 130 दैट इज करेक्ट। देन दिस इज वो गलत लिखा था मैंने। जस्ट चेक कर लेना अपना आंसर प्लीज। नाउ इज इट मैचिंग? यस सर। Yes sir, now makes sense sir. Okay. So in such a question, the first half draft answer is already known to you before you start the problem. Because 5.7 पे half टच कर गया था, जब half टच कर गया उसके बाद थोड़ा सा पानी नीचे 5.69 जाएगा डॉक वाटर हाइट, half draft will also be the same. And it will keep going same. एक चीज पूछना था सर, इस कंडीशन में जब हमारा क्रिटिकल पीरियड स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट टू एंड, तो इसमें तो हमेशा ही हमारा सर जो ट्रिम फॉरवर्ड है वो बढ़ेगा ही और ट्रिम आउट हमारा माइनस में ही रहेगा। Till waterline number 3. हाँ सर 3, जब दोनों मतलब बैठ जाएगा पूरा तब तक। जब दोनों बैठ गया उसके बाद में दोनों ही डाउन जाएगा। अब कोई चेंज ऑफ ट्रिम नहीं हो रहा, करेक्ट। अब खाली मीन राइज हो रहा है। जी
only P upon TPC will be happening. There will be no change of trim. Yes, sir. जैसे मैं That is after 3, right, sir? After 3 की बात हो रही है अभी. That's what he is asking. हाँ, नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ जैसे ड्राफ्ट टेबल में हमने जो किया है, तो ट्रिम फॉरवर्ड था उसको हमने पॉजिटिव लिया हुआ है, ट्रिम आफ्ट को माइनस लिया हुआ है क्योंकि जहाज आगे से बैठ रहा है. बट जहाज हमेशा आगे से तभी बैठेगा ही जब हम इनिशियली हम डॉक करने जा रहे हैं. मतलब हम आफ्ट टच हुआ है तो मतलब अब तक हम P 0 नहीं हुआ था हमारा, मतलब हमारा नहीं सॉरी, मतलब जब तक हमारा जहाज बैठ नहीं जाता तब तक हमारा आगे ही बढ़ता रहेगा ना ड्राफ्ट. जी बस यही पूछ. Till waterline 3, the Yes. forward draft will rise, increase, Yes. sorry, not rise, Yes. increase, Increase, and yes. aft draft will decrease. Decrease, yes. Post waterline 3, after waterline 3, both will decrease. Yes, because वो mean rise है, मतलब नीचे बैठेगा, waterline नीचे ही जाएगा. Yes. उसके बाद दोनों ही माइनस होंगे. जी सर. And खाली mean rise होगा. Sir, in questions normally always come trim by stern only, always, or sometimes by head also. Mostly we are preparing you for stern trim only. Okay, sir. Mostly stern trim. Dry docking is always with stern trim, never with down by head. Dry docking is Yes, always may with by stern. question they can may ask also. The question may they ask also that if it is down by head, what other things will change and all. No, अभी नहीं. अभी at this point of time just hold it. अभी वो लास्ट में जब मैं बाउंसर कराऊंगा ना, आखिरी लास्ट वीक में, तब उस वक्त बाउंसर्स में मैं ये टच करूंगा. अभी नहीं टच करना चाहता. अभी मैंने वैसे ही बाउंसर चल रहा है. Okay, sir. उसके ऊपर एक और Okay, बाउंसर sir. फेंक दिया तो आप कहोगे कि तो पूरा का पूरा ये सब बाउंसर ही चल रहे हैं. तो इसलिए अभी इसी को ही चलने दो. Yes, sir. वैसे ही घमासान चल रहा है. To understand this only. So इसलिए अभी मैं और बाउंसर फेंकना नहीं चाहता. ठीक है, is that okay? So this will be your full question basically. ठीक है, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए घर के लिए ले लो. Take one question for practice at home. Okay, sir. Vessel of W 6,500 tons. Vessel of W 6,500 tons. Length 120. What is that, sir? HF? Length. Length 120. Okay. HF 2 meters forward of midship. So 2 meters? 2 meters forward of midship. 2 meters forward of 2 मीटर के 4 2 मीटर meters. 2 ना HF 2 meters forward of midship. Can you just put your mics on mute, please? सर ये डैनी है हाँ सर. सर, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है सर. एक मिनट रुको, मैं म्यूट कर देता हूँ. Okay, MCT HF 2 meters forward of midship. MCTC 110. MCTC 110. TPC 15 15 tons per centimeter. TPC 15 15 tons per centimeter. KM equals 6.7 meters. KM equals 6.7 meters. KG
equals 6.1. kg equals 6.1. Forward draft 4 meters. Aft draft 6.2 meters. Forward 4 meters. Aft 6.2 meters. Is floating in a dry dock. Where dock water height Sir, is floating in a Sir, is floating in a dry dock. yes, sir. Where dock water height is 6.5 meters above the top of the blocks. Calculate RGM and drafts fore and aft. When number one, drafts forward and aft. I'll repeat this once again. Sorry. Calculate the RGM and drafts forward and aft. And draft forward and aft. When number one, waterline is lowered by 1 meter. Waterline is lowered by 1 meter. Number two, waterline is lowered by another 1 meter. Waterline is lowered by another 1 meter. ओके सर. ओके. सेकेंड पार्ट के लिए आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा. सेकेंड पार्ट के लिए मैं कल बताऊंगा how to do that, but try to attempt it. I want you to attempt it. सर ड्राफ्ट कितना बोला था? 4 and 6.2. आगे का 4, पीछे का 6.2. Sir, how much was the length? Can you just repeat? Length is 120. 120. So the particulars are 6,500, 120, 2 meters forward, 110, 15, 15, 6.7, 6.1, 4 meters, 6.2, 6.5 dock water. Waterline lowered by 1 meter, lowered by another 1 meter. ठीक है? okay, sir. All right. चलो. See you tomorrow. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. मम्मी क्या किसका होना है ये? आजकल बहुत दिक्कत है अरे गया का वो यही गया कि जाता शक हो गया है ना दूसरे का कोई चिंता है ना बहुत. अरे बंद करवा दो यार, घर की बातें सुन रहे हैं.
मैं क्यों वंदना की है